Hello friends, welcome to Manu Law Classes. मेरा नाम गौतम दीक्षित है. In today's video, we are going to discuss the important news from the Hindu edition of 11th March 2023. So let's start with the news from the first page actually. So the first page में बहुत ही important news है, that is about the H3N2 flu. It claims 2 lives, says the Health Ministry. तो यहाँ पे there are 451 cases which have been confirmed in the country so far. एंड नाउ देयर हैव बीन 2 डेथ्स. और ये जो दोनों डेथ हुए हैं यहाँ पे जो पेशेंट्स थे दे हैड कोमॉर्बिडिटीज. कोमॉर्बिडिटीज का मतलब कि पहले से इनको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स थे एंड नाउ दे कॉन्ट्रैक्टेड दिस H3N2 वायरस which led to their death. So if you will see that in India it is rising again H3N2 virus, okay, with the severe acute respiratory illness. जो इसके सिम्टम्स होते हैं H3N2 फ्लू के वो कोविड-19 के सिमिलर होते हैं. ठीक है, जैसे कोविड-19 के जो सिम्टम्स थे लाइक फीवर, कफ, ब्रेथलेसनेस, वीजिंग एंड न्यूमोनिया. सो दीज आर द सेम सिम्टम्स फॉर H3N2. तो यहाँ पे जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो एडवाइस भी किया है वो वही चीज़ें हैं जो हमने कोविड-19 में देखी भी थी. दैट इज सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्क वेयरिंग टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द वायरस. नाउ अब यहाँ पे क्या है कि अगेन नाउ विच आर द वल्नरेबल पॉपुलेशन. सो यंग चिल्ड्रन, old age persons with comorbidities, they are the most vulnerable population over here, says the ministry. यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इंडिया में अभी तक कितने कंफर्म्ड केसेस हैं. सो 451 कंफर्म्ड केसेस हैं एंड इंडिया हैज रिपोर्टेड अराउंड 9.66 लाख केसेस ऑफ फ्लू इन 2023, बट कंफर्म्ड केसेस विच वर सीन दिस ईयर वाज 451 H3N2 के कंफर्म्ड केसेस हैं. फ्लू के ओवरऑल फ्लू के 9.66 लाख हैं, बट जो H3N2 केस है दैट इज 451. फाइन. उसके बाद अगर आप देखेंगे जो डेथ हुआ है, एक डेथ हुआ है कर्नाटका के हसन के डिस्ट्रिक्ट में. 82 ईयर ओल्ड पर्सन, ही हैड डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर. सेकंड इज इन जिंद डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा वेयर द पेशेंट वाज सफरिंग फ्रॉम लंग कैंसर. ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि व्हाट इज दिस H3N2, ये H3N2 है क्या. ठीक है ना. तो ये अगर आप देखेंगे कि दीज आर द सब टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा ए वायरस. ठीक है ना. सो इफ यू विल जस्ट सी, लेट्स कम टू आवर एक्सप्लेनेशन बोर्ड. तो यहाँ पे अगर आप देखें सो वी हैव इन्फ्लुएंजा ए वायरस. ठीक है, इन्फ्लुएंजा ए वायरस के सब टाइप्स होते हैं. ठीक है ना, इसके सब टाइप है. तो यहाँ पे वी हैव दिस थिंग विच इज कॉल्ड एज H3N2. अब यहाँ पे H का मतलब क्या हुआ, N का मतलब क्या हुआ, ये समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो देखिए देयर आर 2 प्रोटीन्स विद दिस वायरस. पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जो इन्फ्लुएंजा ए वायरस टाइप होते हैं ये RNA वायरस होते हैं. जैसे आपका कोविड-19 RNA वायरस था, वैसे इन्फ्लुएंजा ए वायरस भी RNA वायरस होता है. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे H और N का मतलब क्या है. सो दीज आर द 2 प्रोटीन्स. अब इन प्रोटीन्स को हम किस नाम से बुलाते हैं. सो वन इज हेमाग्लूटिन. H का मतलब हो जाएगा हेमाग्लूटिन, दिस इज H. एंड N का मतलब हो गया न्यूरामिनिडेज. N का मतलब क्या हो गया, न्यूरामिनिडेज. ठीक है, ये 2 प्रोटीन होते हैं. अब इन प्रोटीन्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, H1, H2, H3, H5, ओके. N के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, N1, N2, N3. तो जैसा H और N का टाइप होगा वैसा हम इस इन्फ्लुएंजा ए वायरस के सब टाइप को नाम देंगे. जैसे कि आपने पहले भी सुना होगा H1N1 वायरस. ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो हेमाग्लूटिन प्रोटीन है टाइप 1 और जो न्यूरामिनिडेज है टाइप 1. बट हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट H3N2. तो यहाँ पे का मतलब हो जाएगा कि हेमाग्लूटिन टाइप 3 एंड न्यूरामिनिडेज टाइप 2. सो दिस इज द H3N2 वायरस. H3N2 वायरस. ठीक है. नाउ मूविंग अहेड. सो यहाँ पे थोड़ा नीचे आते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. दैट इज चाइना help Saudi Arabia and Iran to restore relations. So now this is the geopolitical thing related to Middle East. ठीक है ना, it is related to Middle East. So अगर आप देखेंगे सऊदी अरेबिया एंड ईरान, so they are arch rivals. ठीक है, इनकी जो rivalry है वो बहुत पुरानी है और sometimes it has a religious root because Iran is a Shia country and Saudi Arabia is a Sunni country. So they did not had any diplomatic relations since 2016. So over here China has helped to restore the diplomatic relation between Saudi Arabia
एंड ईरान। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे दैट रीजनल राइवल्स ईरान एंड सऊदी अरेबिया दे एग्रीड ऑन फ्राइडे टू रिस्टोर टाइज एंड रीओपन diplomatic missions in Chinese brokered talks, they said in a joint statement several years after relations were severed. Okay, now see what was the reason for cutting ties. So Riyadh, it cut ties with Tehran after Iranian protesters attacked Saudi diplomatic missions in the Islamic Republic in 2016 following the Saudi execution of Shia cleric Nimr al-Nimr. ठीक है, now this rivalry, the rivalry between Saudi Arabia and Iran, it plays out in Middle East countries. So let's take the example of Yemen. ठीक है ना, अगर आप येमन का एग्जाम्पल लें, ठीक है ना, तो येमन में हाउथी रेबल्स जो हैं, देयर इज अ फाइट गोइंग ऑन बिटवीन हाउथी रेबल्स एंड गवर्नमेंट फोर्सेस। ठीक है, अभी टू अपोजिंग कैंप है। अब यहाँ पे देखिए येमन में कैसे ये रीजनल राइवलरी प्ले आउट करता है। और सी दिस गवर्नमेंट फोर्सेस येमन में दे आर सपोर्टेड बाय सऊदी अरेबिया, और जो हाउथी रेबल्स हैं दे आर सपोर्टेड बाय ईरान, दे आर सपोर्टेड बाय ईरान। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो दे this regional rivalry it plays out in larger Gulf countries. So China has helped to restore the relation between Saudi Arabia and Iran. Now if you will see कि यहाँ पे चाइना को क्या हेल्प मिला है, ठीक है ना, चाइना को क्या हेल्प मिला है, तो सी दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज जियो पॉलिटिक्स। अगर आप इसको अगर लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखोगे, यूएस से अगर इसको आप कंपेयर करोगे, तो देखिए अगर आप एक मिडल ईस्ट और साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया का पूरा एक जोन देखेंगे, तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो चाइना का जो रोल है वो बढ़ते जा रहा है। ठीक है, खास करके देखिए इसकी ज़रूरत कब पड़ी, व्हेन सी अफगानिस्तान से जब यूएस ने विड्रॉ किया तो वहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हुआ और वहाँ पे तालिबान आया। गॉट इट। नाउ अब चाइना का यूएस का और ईरान का जो है वो न्यूक्लियर डील पे जो है वो एक तरीके का वो स्टेलमेट ही चल रहा है। सो ईरान हैज स्टार्टेड लुकिंग टुवर्ड्स ईस्ट, स्पेशली टुवर्ड्स चाइना, इंडिया एंड रशिया। ओके, एंड देन इफ यू विल सी दैट largely by and large that US withdrawing from Gulf countries also. Okay, so यहाँ पे अब क्या है कि ये जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है after the US withdrawal from various region, that vacuum is being filled by now China. So you can say that China now is coming at center stage in Gulf countries also. Now coming to a very important editorial, इससे related एक news भी है, उसको भी हम अच्छे से करेंगे। ठीक है, it is about the virtual assets, that is cryptocurrencies. So now those who are holding the cryptocurrencies, they have to now inform the transactions in cryptocurrencies. It will now be informed to Enforcement Directorate, which implements the Prevention of Money Laundering Act PMLA 2002. So see, the Finance Ministry in its March 7 notification has placed all transactions involving virtual digital assets under the purview of Prevention of Money Laundering Act. ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड दिस एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, सो द रैशनल बिहाइंड दिस एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज वेरी सिंपल. There is one report by brokerchooser.com. It came out in July 2021, which has said that India is the country with the highest number of crypto owners at 10.07 crore, which is 3 times the number of the owners in advanced economies like USA. Okay, now why there is a need to place the all transactions involving all virtual digital assets under PMLA. So if you will just see that last month when the budget session was going on, so Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary has informed the Lok Sabha that the Enforcement Directorate was investigating several cases related to cryptocurrencies fraud where crypto exchange has been involved in money laundering. ठीक है, तो ऐसे ये रिपोर्ट्स आए कि जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, ओके, दे हैव बीन इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग. Now if you will just see that as much as 936 crore had been attached or frozen as on January 31. Fine. तो अगर आप देखेंगे that there is a financial action task force, okay, which has continuously flagging the potential. It is saying that virtual currencies, they can be misused by
they can have a criminal misuse, they can be misused by criminals, okay, because considering the speed and anonymity with which they can be traded worldwide. तो जैसे virtual currencies में क्या होता है कि you will not know the ownership that who is owning this currency, and it can be transacted very fast at the global level. Got it? So it allows there can be money laundering using virtual currencies, or there can be terror financing also, which has been highlighted by Financial Action Task Force. So under this move, the government, the finance ministry has now said that every transactions will be placed under monitoring under PMLA. Now coming to AUKUS. Okay, AUKUS, it is a trilateral security partnership between three countries, that is United States, Australia and United Kingdom. Okay, one of the important pillar of AUKUS is that Australia plan to acquire nuclear powered submarines within the next decade. Okay, so यहाँ पर अगर आप देखेंगे that the country it requires a favorable path to develop deterrence capability against potential adversaries. Okay, now see यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि AUKUS में क्या है कि ऑस्ट्रेलिया is going to acquire न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन. ना देखिए न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन का मतलब क्या हो गया, ये आपको समझना पड़ेगा अच्छे से. वी आर सेइंग न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन. इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि द पावर टू मूव सबमरीन इट विल बी डिराइव्ड फ्रॉम न्यूक्लियर पावर. ठीक है ना, इट नेसेसरीली डज नॉट मीन दैट इट विल कैरी न्यूक्लियर वेपन, बट इट विल ओके, बट द propulsion विल बी कैरिड आउट बाय न्यूक्लियर पावर. फाइन. तो यहाँ पे देखिए कि देयर आर मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडोनेशिया विच हैव रिजर्वेशंस अबाउट ऑस्ट्रेलियन नेवी ऑपरेटिंग न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स इन इंडियन ओशन रीजन. ओके, सो यहाँ पे क्या है कि कैनबेरा means Australia has attempted to assuage the concerns by explaining to its countries in the Indian Ocean region that AUKUS does not provide Australia with nuclear weapons capability, but is rather a means of acquiring nuclear maritime propulsion. कि यहाँ पे ठीक है ना, by if US and UK supply the nuclear power submarine, that does not mean that Australia will have nuclear power, but it will have nuclear maritime propulsion. That is the difference. Okay, then they have attempted to distinguish AUKUS from Quad, where it says that Quad is a normative grouping that lays out a vision for the region, and AUKUS is a more technical arrangement. That is what they are saying. Now if you will see that acquiring the SSN nuclear powered attack submarine, okay, fine. So there are various ways with its advantages and disadvantages. The first is that US to build nuclear powered attack submarines for Australia. Okay, but US policymakers seem skeptical about this option because US senators, they have wrote to President Joe Biden that selling nuclear submarines to Australia will jeopardize US national security, because there is itself a scarcity of nuclear powered attack submarine in USA. Then coming to second option, that Australia can take the help of UK to expand. Okay, so UK, what UK can do, UK can expand its Astute class program to Australia. Okay, but here also there is one catch. That catch is that UK is itself constructing its Dreadnought class ballistic missile submarine program. Okay, and it is designing it to replace the Astute class. Okay, so now Australia goes for Astute class submarine. So integrating the onboard combat system would be difficult because there is a difference between current Australian and American fleets. Then the third option is that developing a new nuclear submarine design for Australia. Okay, so यहाँ पे क्या हो सकता है कि कैनबेरा और ऑस्ट्रेलिया दे कैन अनाउंस अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ यूएस नेक्स्ट जनरेशन अटैक सबमरीन और यूके सबमर्सिबल nuclear replacement program. But here also there is a challenge. Okay, because there is a strict US export controls, okay, which Australia has to navigate. Fine. So these are some of the problems of AUKUS and acquiring the nuclear attack submarine from another country. Then there are certain things which USA can do, Australia can do, that it can operate nuclear powered submarine with high enriched uranium fueled reactors by exploiting a loophole in the international law, where Australia can withdraw the fissile material which is kept under IAEA safeguard. But again, this will set a very wrong precedent in the world, because other countries might use this loophole for building the nuclear arsenal in their own countries. The next is rescue efforts to India in Turkey, in Turkey's lauded, says Modi.
तो यहाँ पे देखिए आवर प्राइम मिनिस्टर ही वाज इनॉग्रेटिंग द थर्ड सेशन ऑफ द नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन. Okay, and he has said over here that there has been a global appreciation for the work of Indian rescue team in earthquake hit Turkey and Syria. So what is NPDDR? तो यहाँ पे देखिए एक स्टैटिक क्वेश्चन है. NPDDR, it is a multi-stakeholder platform constituted by the government of India to facilitate dialogue, sharing experience, views, ideas, action-oriented research and explore opportunities in the area of disaster risk reduction. Now coming to this ED, government amends KYC to add NPOs politically exposed person. तो जो हमने अभी एडिटोरियल में किया है that the transaction in digital in virtual currencies or in virtual assets will be now placed under PMLA monitoring. So this is the thing where the Union Finance Ministry has amended the prevention of money laundering, maintenance of record rules for widening the scope of know your customer norms to include 3 entities. That is politically exposed person, non-profit organizations and those dealing in virtual digital asset as a reporting entities. Reporting entities का मतलब now they will be reporting their transactions to ED under PMLA. Fine. तो यहाँ पर आप देखेंगे so dealing in VDA virtual digital assets such as cryptocurrency, reporting entities under the Prevention of Money Laundering Act, okay, making it mandatory for them to adhere to KYC requirement. So here what will happen that the reporting entities are required to keep all the relevant records of their owners and transaction for 5 years. Then who are politically exposed persons? They are the individuals who have been entrusted with prominent public functions by a foreign country, which includes head of states or governments, senior politicians, senior government or judicial or military leaders and important political parties. फाइन. नाउ अगर आप देखेंगे कि दैट इन सच केसेस कोई भी ट्रांजैक्शन अगर 10 लाख के ऊपर है या 10 लाख है दैट इट विल बी रिपोर्टेड टू फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट. फाइन. देन अनदर की डिसीजन इज दैट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म्ड फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस एंड रजिस्टर्ड एज ट्रस्ट सोसाइटीज हैव बीन एडेड टू द लिस्ट. देन व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फॉर ओनरशिप? दैट इज 25%. तो पहले 25% था, अब उसको 10% कर दिया गया. इसका मतलब that any individual group who are holding 10% ownership in a reporting entity, they will be termed as beneficial owner of that particular entity under this new PMLA rules. The next is India US to launch a semiconductor subcommittee. तो यहाँ पे हमने इसके बारे में कल भी पढ़ा था. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे a subcommittee has been launched under the, देखिए यहाँ पे important points लिखते जाइए. पहला क्या है? सेमीकंडक्टर सब कमेटी बना है किसके अंदर? तो कमर्शियल डायलॉग बिटवीन यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इन तीनों एंटिटी के अंदर एक एमओयू साइन किया है फॉर सेमीकंडक्टर सब. ठीक है. अब यहाँ पे देखेंगे कि इस एमओयू का इम्पोर्टेंट वो क्या है, फोकस क्या है. तो यहाँ पे क्या है? सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन इनोवेशन पार्टनरशिप. फाइन. उसके बाद अगर आप देखेंगे दैट देयर विल बी फोकस ऑन रिलायबल सप्लाई चेन, डाइवर्सिफाइंग एंड फ्रेंड शोरिंग, that is sourcing of material from friendly countries, then facilitating climate and clean technology cooperation, inclusive digital growth, talent development, post-pandemic economic recovery and focus on cooperation. Okay, these are all the parts of commercial dialogue between India and US. Now then a new initiative which was earlier launched, it has been mentioned over there, that is called as ICET. What is the full form of ICET? It is in US India Initiative of Critical and Emerging Technology that will broaden the strategic technology partnership between the two countries. The next is Air India pilots allowed to fly 2 aircraft types. तो यहाँ पे the Director General of Civil Aviation has allowed a small batch of Air India pilots who are to be interchanged between Boeing 777 and 787. तो देखिए क्या होता है कि पायलट जो होते हैं हर फ्लाइट्स के वो अलग अलग होते हैं. ठीक है ना. अब जैसे यहाँ पे 2 फ्लाइट्स हैं, बोइंग 777, बोइंग 787. तो अब एयर इंडिया के पास क्या होगा, कुछ ऐसे पायलट्स होंगे जो बोइंग 777 चला सकते हैं, कुछ ऐसे जो बोइंग 787 ही चला सकते हैं. तो यहाँ पे DGCA का जो पहला रूल था वो ये था कि इफ द पायलट इज फ्लाइंग 777 और 787 दे कैन नॉट बी इंटरचेंज, बट अंडर दिस रूल्स नाउ दे कैन बी इंटरचेंज बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ पायलट्स. ठीक है. तो ये अभी ट्रायल पीरियड के लिए स्टार्ट हुआ है. ठीक है. और यहाँ पे जो है दैट दे विल बी एबल टू फ्लाई अ मिनिमम ऑफ 150 आवर्स ऑन द न्यू टाइप इंक्लूडिंग अ मिनिमम ऑफ 10 लैंडिंग्स. गॉट इट. अब यहाँ पे देखिए कि ये जो रूल्स है वो क्यों आया था कि इंटरचेंज नहीं हो सकते. तो यहाँ पे एक कहानी है
अक्टूबर 12, 1976 का, जब कैप्टन के.डी. गुप्ता, हु वाज देन ऑपरेशंस मैनेजर एट इंडियन एयरलाइंस इन मुंबई, he flew a Boeing 737 from Delhi to Mumbai, and then he had to step in to fly a Cavalry flight to Bangalore because of non-availability of fuel. But during the takeoff, there was an engine fire, and he could not shut out of the fuel supply because the procedure to switch off that was different between Boeing and Cavalry flight, which led to accident and all the people on the board died. So that's why there was a rule. Now, because of shortage of pilot, now Air India pilots, they can fly two aircraft types. The next is India Australia sign audio visual co-production agreement. So India and Australia, they have signed an audio visual co-production agreement under which private, quasi government or government agencies of the two countries enter into contracts to produce films together. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया इज नॉट अ फर्स्ट कंट्री विद विच इंडिया हैज साइंड सच एग्रीमेंट. इट हैज ऑलरेडी साइंड सच एग्रीमेंट विद 15 countries which include United Kingdom, France, Germany, Italy, Canada. Right. The next is help cow shelters market dung based formulation for farming. तो यहाँ पे जो नीति आयोग है, that is National Institution for Transforming India, नीति आयोग, तो यहाँ पे they are saying that gauशाlas, they can become a major supplier of inputs for natural farming in the country. Okay, through the concerted efforts of government, private and entrepreneurs, says the नीति आयोग. तो एक रिपोर्ट है, that is okay, production and promotion of organic and biofertilizers with special focus on improving economic viability of gaushalas. Here they say that the center can help cow shelters so that they can market cow dung and cow urine based formulations for applications in agriculture. So this will substitute the chemical based farming, okay, with the organic farming or natural farming. Okay, now there is one scheme which is called as GOBARdhan, and okay, there is one scheme which is called as GOBARdhan. This is the scheme which is being implemented under Swachh Bharat Mission Gramin Phase 2. Phase 2. So it is being implemented by Union Ministry of Jal Shakti. Okay, और यहाँ पे what is the aim of this program? That is to convert biodegradable waste, जो हमारे जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं ना, जैसे काउ डंग हो गया, ये सब, तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हमें कंप्रेस्ड बायोगैस में कन्वर्ट करना है. ये एक प्रोग्राम है, ठीक है ना. तो गोबरधन मतलब कि यहाँ पे देखिए नेम ही सिग्निफाई कर रहा है कि गोबर से, मतलब हाउ टू मोनेटाइज काउ डंग. फाइन. तो यहाँ पे गोबरधन का फुल फॉर्म जो है वो है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, दैट इज कॉल्ड एज गोबरधन. The next is Xi begins third term as president in firmer control. So President Xi Jinping, he has started his third term as the president of China and has been confirmed by National People's Congress, which is a legislature of China. Fine. So all the 2,952 members of National People's Congress, they have voted and they have given their approval for the reappointment of Mr. Xi Jinping as the president of China for the third 5-year term. Fine. तो यहाँ आज से 5 साल पहले जो NPC था उसने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसको चेंज किया था, allowing Xi to continue as the president for the third term. वरना उसके पहले क्या होता था कि that every leaders, okay, like Jiang Zemin, Hu Jintao, they all stepped down after 10 years at the helm. But Mr. Xi, after the amendment in the party constitution and everything, now he has started his third 5-year term. ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देयर इज अ मेंशन ली कियांग. ओके, ही इज गोइंग टू बी अपॉइंटेड एज प्रीमियर टू सक्सीड ली के कियांग. देन न्यू चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर किन गैंग, who recently visited China, he will replace Wang Yi. Wang Yi himself has been promoted to the Politburo. फाइन. उसके बाद जो एनुअल NPC था उसने क्या कहा था, कुछ टारगेट्स दिए थे that there will be growth in China's economy around 5%. and it suggested 72% hike in defense spending. उसके बाद कुछ important steps लिए गए हैं चाइना में अभी recently, that is new national financial regulatory administration has been set up to closely manage the country's $60 trillion banking asset and entire financial industry except security sector.
Then there is National Data Bureau, which will be in charge of all data related institutions and managing data resources. The next is Index of Industrial Production. So January industrial output rises 5.2%. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे that consumer durables output contracted for the second straight month, okay, but there was growth, double-digit growth in electricity generation for the third successive month, and manufacturing output growth remained tepid at 3.7%. So over here we are talking about index of industrial production. So index of industrial production, it is released by National Statistics Office or National Statistical Office. It gives the idea of volume of industrial output. Fine. And in this, around 40.27% weightage is for core sector, the 8 core sector. The next is appointment. So Hindustan Unilever Limited has named Rohit Java, who is currently serving as the Chief of Transformation for Unilever in London, as the new Managing Director and CEO of the company. Okay, so friends, that's all for today. We will meet next week again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.